Hello students, good evening. So in the previous video we are solving solving some numericals related to space force, correct? So we'll continue the same topic in this particular video lecture. Okay. So I think this is the problem we solved. I think this is the last problem which we solved in the previous video. So we started with the numerical based on equilibrium of concurrent forces. So in this particular class we will take one more problem related to the equilibrium conditions. Okay. So here is the problem. I think in the previous video I had already told कि I had uploaded one PDF file in Google Classroom. In that particular space force file, the diagrams are whatever the diagrams you are seeing in this particular file, वो थोड़ा क्या बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट है, बट दूसरा फाइल अपलोड किया हूँ. इन दैट पर्टिकुलर फाइल यू कैन सी बेटर डायग्राम्स. ठीक है. Okay, let's start the problem. Question. A 16 kg triangular plate is supported by 3 wires. Determine the tension in each wire. ठीक है. So what is trying to tell is there is a triangular plate which is supported by a 3 wires. So that means the triangular plate is, you can see ABC. This is the triangular plate. Okay, and that particular plate is supported by using 3 wires. So you can see from A it is connected at point D. Okay, some from B it is connected sorry okay from B it is connected like this, and similarly from C it is connected like this. Okay, so he is asking find the tension in each wire. So you need to find the tension in this wire and even this wire. Clear? So let's see how you are going to solve this problem. And you know this is the problem based on the equilibrium. You know the conditions, or you know the formulas, and you know the procedure which I already told in the previous video also. Ki you remember the procedure. If you remember the procedure, it is very simple. Okay. And especially the first step is most important one. The first step is to find the coordinates of the points. Okay. You can see here also the first step is coordinates. Okay. So let's see what are the different coordinates. Okay, first there are find out how many points are there. Okay. So there is A, there is A point, correct? There is B, there is C, and there is D. Clear? And you need to find out the coordinates of these 4 members. Plus I think you need to even the weight of the triangular plate also it is given. So that is another coordinate also you need to find out. ठीक है, वो देखेंगे पहले A, B, C और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करता है. ठीक है. Okay, so where is the origin? Origin is here. So this is the origin. Exactly थोड़ा. This is the origin point. ठीक है. So okay, now what you have to do is find the coordinates of the different points. First from A to this thing find out करना है. From origin A का coordinate find out करना है. So always I told from origin A तक आपको जाना है, और आपका जाने का रास्ता क्या है? You have to walk through like x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में. सिर्फ यही 3 डायरेक्शन में आप जर्नी कर सकते हो. ये ऐसा नॉर्मल वर्ड्स मैंने यूज़ किया था. चलो फ्रॉम O टू ए जाते हैं. O टू ए जाने के लिए मैं इधर से निकला और मैं इधर पहुंच गया. ठीक है, दिस. सो दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में मूव हुआ मैं, करेक्ट है, और पहुंच गया. सो डायरेक्शन एक्स प्लस डायरेक्शन है. अगर इस डायरेक्शन में रहता तो माइनस होता, करेक्ट है. सो वाई डायरेक्शन ऐसा है,
अगर नीचे गया रहता तो -y रहता। z डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, उसके पीछे गए रहता तो -z होता। तो ये आपको मैंने पता है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये सब पहले क्लासेस में मैंने बता दिया हूँ। ठीक है। सो नाउ बाय सीइंग द डायग्राम फ्रॉम O टू A जाने के लिए आपने इधर से इधर ट्रैवल किया। सो दैट इज़ अलोंग x डायरेक्शन, दैट इज़ +x। और कितने दूर गए, देयर इज़ अ डायमेंशन हियर, यू कैन सी आई रिटर्न हियर। इसलिए डायग्राम को प्रॉपर से देखो, दिस इज़ द डायमेंशन, हाउ मच 400। तो x कंपोनेंट इज़ +400, करेक्ट है। y कंपोनेंट क्या है, 0। z कंपोनेंट क्या है, 0। दैट इज़ +400 0 0। ठीक है, चलो देखते हैं। दैट इज़ यू कैन सी हियर, ए कंपोनेंट क्या है, 400 0 0। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, बी को जाते हैं। ठीक है। सो वंस अगेन दिस इज योर ऑरिजिन एंड वेयर इज द बी पॉइंट। समझो बी पॉइंट किधर है, इधर। ठीक है। सो नाउ आई नीड टू ट्रैवल। ठीक है, वंस अगेन फॉर ट्रैवलिंग यू नीड टू चूज XYZ डायरेक्शन। तो मैं कैसे ट्रैवल करूँगा, समझो either I can go travel from here to here, then from here to here, or I can travel from here to here, then here to here। कोई भी एक डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो पहले लिया है समझो वही रखने वाला हूँ। ओके, सो नाउ जो पहला ग्रीन है दैट इज़ दिस वन, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, -x, करेक्ट है। और कितने दूर जा रहा है, मतलब व्हाट इज़ द डिस्टेंस, 200 mm। सो दैट मीन्स -200 x कंपोनेंट। और y डायरेक्शन में जा रहा है क्या, नहीं, 0। सो z डायरेक्शन, नेक्स्ट वन इज z डायरेक्शन में जाने वाला है, तो ये वाला, ये कौन सा डायरेक्शन है, z डायरेक्शन, कितना, 200, करेक्ट है। सो 2 + 200, सो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, -200 0 200। चलो चेक करते हैं, यू कैन सी देयर -200 0 200 बी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सी का चेक करते हैं। ठीक है, सो वेर इज सी नाउ, सो वंस अगेन दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, देर इज सी। सो नाउ आई नीड टू ट्रैवल। कैसे जाऊंगा मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वंस अगेन मैं इधर से इधर तक आऊँगा, करेक्ट है। और उधर से फिर से जाऊंगा मैं ऐसा, XYZ डायरेक्शन। ओके, पहले सैफरन कलर का लाइन कितना, कौन सा डायरेक्शन में, -x। और कितना दूर पहुंचा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, 200। तो x कंपोनेंट इज -200। देन ग्रीन कलर का लाइन इज अलोंग z डायरेक्शन, दैट इज ऑल्सो -z, करेक्ट है। कितना दूर, 200। सो y डायरेक्शन तो 0 है, -200, करेक्ट है, दोनों माइनस है। So you can see -200 0 -200, so you can see -200 0 -200। ठीक है, लास्ट पॉइंट डी वाला। ठीक है, वेर इज डी, ओके, पहले हम फिक्स करते हैं ऑरिजिन को। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू डी पॉइंट। सो नाउ फ्रॉम ऑरिजिन टू डी जाना है, सो आई विल डायरेक्टली ट्रैवल लाइक दिस। ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ट्रैवल। तो x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट यस y डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, 600 mm। तो +600 बिकॉज आपका y डायरेक्शन अपवर्ड है। देन z 0। ठीक है, सो 0 + 600 0, यू कैन सी हियर 0 600 0। तो यू गॉट टू नो A B C D का, करेक्ट है। देन इवन W का भी है, A का हो गया, B का, C का, और D का भी कोऑर्डिनेट, इट इज़ वेट इट विच पासेस थ्रू द सेंटर पे, वो देखेंगे बाद में कैलकुलेशन के टाइम पे आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप
that is you are going to find out the coordinate of A, B, C, D different points. ठीक है, चलो we'll continue with the calculations. Okay, second step, that is you need to find out the force vector. ठीक है, so force vector, you know the formula, force vector is equal to force into unit vector. Clear है? So start. What are the force vector? That is you need to find out the force in AB, correct है? AD, BD, CD. So these are the four force vector plus W is there, weight of the what we'll call the triangular plate, उसका W भी आएगा, correct है? So we can see here there are four force vectors are there, FAD, FBD, FCD and force vector W. ठीक है, चलो first one is force AD, that is force vector AD. Force vector AD is equal to force AD into unit vector AD, correct है? So AD, so that means you need to consider A and D coordinates. ठीक है, so ऊपर ये, so A and D coordinate, that is this one and this one. Okay, TA XD minus XYZ coordinate ना, XD minus XA, YD minus YA, ZD minus ZA numerator, correct है? So once again I am not going to explain this point क्योंकि previous lecture में मैंने ये सब basic समझाया है. तो let's start. 0, change the color. Okay, 0 minus 400 I direct लिखा हूँ. You can see here 600 minus 0, that is 600J, 0 minus 0, that is 0K, divided by under root of 400 square plus 600 square plus 0 square. So you don't know FAD, so FAD into minus 400I plus 600J plus 0K divided by under root of जो भी 400 square plus 600 square plus 0 square था उसका under root, it becomes 721.11. Then 400 minus 400 divided by 721 is minus 0.554. 600 divided by 721 is 0.832J. 0 divided by 721 is 0. So finally you got this equation, that is force vector AD is equal to FAD into minus 0.554I plus 0.832J. ठीक है, so हो गया force AD. Now we will move on to force BD. ठीक है, so force vector BD is equal to force BD into unit vector BD. So now BD is this, okay, this and this. Okay, so let's say 0 minus of minus 200, that is plus 200. So you can see here 200I. 600 minus 0, that is 600. Then 0 minus 200, that is minus 200. ठीक है, divided by 200 square plus 600 square minus 200 square. So once again you do the same calculation. So you'll get one more equation, that is force vector PD. ठीक है, this is equation number 2 and this is equation number 1. ठीक है, so third, that is force CD. So now force CD is this one and this one. Okay, 0 minus of minus 200, that is 200. You can see 200I. 600 minus 0, sorry, 600 minus 0, so 600. Then 0 minus of minus 200, that is 200. So once again divided by 200 whole square plus 600 square plus 200 square. So once again you do the calculation, you don't know FCD, you do the calculation, you will get finally the third equation, that is FCD into 0.301I plus 0.904J plus 0.301K. ठीक है, next the last one is weight of the triangular plate, that is weight vector, the W. Okay, if you see the diagram, so weight, it is acting downward,
तो x component is 0, z component is 0, and vertically downward is minus y. So that's why you can see I have written clearly key x component is 0, z component is 0. You can see the dotted line. ठीक है, so 0 x component is 0 and z component is 0. ओके, सो ओनली y component is there, that one also डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि आपके डायग्राम में y डायरेक्शन y एक्सिस इज अपवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन में इट इज माइनस, सो माइनस y दैट इज -16 वैल्यू दिया है y component का वैल्यू, बट इट इज़ इन kg, दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग इनटू न्यूटन, माइनस दैट इज 16 इंटू 19.81 J. ठीक है, दैट इज -156 J. सो अल्टीमेटली this is your fourth equation. So you have four equations: force vector AD, second equation force vector BD, third equation force vector CD का, और fourth last one is weight vector. ठीक है, you got to know four equations. Clear है? So now what is the next step? You equate all the equations to summation of x is equal to 0, summation of y is equal to 0, and summation of z is equal to 0, because the problem is equilibrium of the space force. Correct? So all the x components you take it and equate to 0. So what is the x component in this one? minus 0.554. Correct? You can see here minus 0.554 into FAD. You can see here FAD into minus 0.554. Similarly, either FBD into 0.301. correct है, इधर FCD into 0.301, इसमें it is 0. So you can see here the equation minus 0.554, 0.301 FBD, 0.301 FCD, W का वेक्टर वेट वेक्टर का 0 था. ठीक है, सिमिलरली यू गो विद द y कंपोनेंट्स. ठीक है, सो y कंपोनेंट्स कौन सा है, इसमें 0.832 FAD, देन इसमें 0.904 FBD, देन इसमें 0.904 FCD, और इसमें -156.96 is the y component. Correct? So you can see and check here -832 FAD, plus 0.904 FBD, plus 904 FCD, and -156.96 is equal to 0. Everything should be equal to, that is all the x components एक equation बनाओ and equal to 0. all the y components एक जगह पे लेके आओ equal to 0. all the z components एक जगह पे लेके आओ is equal to 0. ठीक है, ओके. लास्ट z components, इसमें 0 नहीं है, सॉरी, और इसमें -0.301 k, दैट इज -0.301 FBD, इसमें प्लस 0.301 FCD, इसमें 0 नहीं है, तो मतलब 2 ही है. चलो, यू कैन सी हियर -0.301 FBD plus 0.301 FCD is equal to 0. So you got 3 equation, these 3. ठीक है, that is 4, 5 and 6. So now what you have to do is you solve these equations. ठीक है, by solving equation 4, 5, 6, finally you are going to get the unknowns. So that is FAD or tension in AD is equal to 62.88 Newton. Similarly, FBD, that is tension in BD, is nothing but 57.87 Newton, and FCD, that is tension in CD, 57.87 Newton. So this is your final result, because he is asking find the tension in the cable. That is 3 cables tha, AD, BD, CD. So you got to know force AD या tension AD, force BD या tension BD, या force CD or tension CD. ठीक है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बट कंफ्यूज होता है. सो स्पेशली कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना. ठीक है, और वीडियो देखो,
यूट्यूब में अपलोड करके लिंक आपको भेजता हूँ। कुछ भी डाउट है तो पर्सनल व्हाट्सअप आपको पता है, पर्सनली आप मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? चलो, थैंक यू।